Hello bachcho, let's read the question. The question says Lewis acid character of boron trihalides is as follows. Option 1 Bi3, Br3, BCl3, Bf3. Option 2 Bf3, BCl3, BBr3, Bi3. Option 3 BCl3, Bf3, BBr3, Bi3. Option 4 Bi3, BBr3, Bf and BCl. The key concept that we will be doing in this question is Lewis acid character of boron trihalides. So सबसे पहले तो लेट्स लुक कि व्हाट आर ल्यूइस एसिड्स. ल्यूइस एसिड्स क्या होते हैं? ल्यूइस एसिड वो स्पीशीज होती हैं जिनके पास फर्स्ट वेकेंट ऑर्बिटल होता है. वेकेंट ऑर्बिटल किस लिए होता है? टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. एंड बिकॉज हमारे पास जो बोरॉन है इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2 2p1. बोरॉन के पास s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड p ऑर्बिटल में इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन. इन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड one of the electrons of s orbital gets excited to 2p orbital resulting in the configuration 2s1 2p2. So in this configuration there is one vacant p orbital which can accept electrons readily from any Lewis base. So इसी lides हैं वो सब क्या है? They show acidic behavior. Now starting from the smallest boron trifluoride, that is BF3. In BF3 boron has a vacant p orbital and the fluorine with which it is forming a bond has an orbital with lone pair of electrons. In BF3, the p orbital of fluorine and p orbital of boron, that is vacant, form a back bond and result in formation of a partial pi bond. This is known as the p-pi overlap. So, because in the case of BF3, there is formation of back bonding, so there is no vacant orbital for accepting the electrons. So we can say that BF3 has the least acidic character. And जैसे जैसे हम फ्लोरीन से क्लोरीन पे एंड ब्रोमीन पे आयोडीन पे जाते हैं, slowly from फ्लोरीन to आयोडीन साइज इज इंक्रीजिंग. बिकॉज साइज इंक्रीज कर रहा है तो जो p ऑर्बिटल का ओवरलैप है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है. So from BF3 to Bi3, the vacant d orbital is readily available in case of Bi3. So the correct order of the acidic trend is BF3, the least one, then BCl3, then BBr3, and the most acidic one is Bi3, जिसमें back bonding बिल्कुल ही नहीं होती and it behaves as a good Lewis acid. So the correct answer to the question is option 1 Bi3, BBr3, BCl3, Bf3. Hope you all understood it well. Best of luck.